Namaste. So now after the first three lectures, we have finally reached the topic of relevant facts of which evidence may be given. कि evidence हम produce कर सकते हैं of these relevant facts. Alright. Now, if you open your Bare Act, first and foremost, keep your Bare Act to section 11 because that is what we are going to be discussing. Then we are going to be moving forward to section 6. But first, let us classify or cut out the Bare Act for what it is till about 55, as I've told you in the previous lectures. So section 6 to 55 are facts which may be relevant to a fact in issue. Before we take a deep dive, let me revise from the previous lectures only. Fact in issue या relevant fact के अंदर पहले अंतर क्या है ये बहुत clearly जान लीजिए. Now fact in issue is मुद्दे की बात, क्योंकि केस तो बहुत बड़ा होगा, so we'll filter out, the court will filter out and court will only eventually consider facts in issue, जिसका हमने short form FIU बना रखा है, not FU, FIU, and relevant facts that are going to be used या उनकी utility क्या है to prove the FIU. So eventually हमारी लड़ाई main किस पे हो रही है, fact in issue पे, and we are using facts which are relevant to prove the FIU or to disprove or to not prove. यही बात चल रही थी. In the previous lectures we have done all this. Just revising once again, and in fact I have also reduced my speed of speaking now so that you don't get confused. You can watch these lectures again so that things become clear. तो अगर हिंदी में बात करें without the fancy legalese, क्या ये ज़रूरी है? अगर मैं फैक्ट को लेके बात करूं, कोर्ट अगर ये प्रश्न पूछे क्या ये ज़रूरी है हम इस पे बात करें, क्योंकि ज़रूरी कुछ और है, which is the fact in issue. इस पे इशू आ रखा है कि भाई साहब हमें इस पे डिसाइड करना है that whether we have to give a decision on this very fact in issue. तो इसी के ऊपर एविडेंस लेकर आओ ना. तो वो कहता है सिर्फ इसी के ऊपर सर कैसे लेकर आऊंगा मैं, मेरे को कुछ और फैक्ट उठाने पड़ेंगे which are relevant to my case. ये मुद्दे की बात है that will either prove, disprove, not prove the fact in issue depending on which side you are on, whether you are on the prosecution side, whether you are on the defense side, right? तो कोर्ट का जो बेसिक जो लॉजिक है कि जी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो आपको रेलेवेंसी दिखानी पड़ेगी. एंड द एविडेंस एक्ट का मेन काम टिल अबाउट 55 इज टू, मतलब ये एक्वागार्ड है, फिल्टर लगा रखा है कि भाई साहब हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. जैसे पिछले लेक्चर्स में नंदिनी जी आदित्य जी का मर्डर कर रही थी. नाउ हर वेयरिंग अ रेड टी शर्ट, लेट अस से अ ब्लू टी शर्ट, टॉमी हिलफिगर टी शर्ट, डज इट इज इट रियली रेलेवेंट? बट व्हाट इफ शी वाज सेइंग कि तुमने मेरी बहन को छेड़ा था, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी मैं. गेस्ट इज सेक्शन 6 में, बट उसमें अलग अगले लेक्चर में बात करेंगे. बट वील गो फॉर सेक्शन 11 राइट नाउ. तो होपफुली द फंडा इज क्लियर कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये फंडा क्लियर हो गया आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट 3 लेक्चर्स, दिस इज द फोर्थ वन नाउ, अगर आपको ये क्लियर हो गया, यकीन मानेगा पूरी एविडेंस एक्ट यू विल बी थ्रू if this funda is clear. So how is this relevant to the FIUs? The fact and issues is the core question that the court is asking, the core question that the Evidence Act is asking. So the main purpose of Evidence Act, again I repeat from the first lecture, save judicial time and only talk on matters which are important to the case, on facts which are important to the case and not anything else. आगे चलते हैं जी. So if we see broadly the Bare Act खोलते चलेगा. Section 6 to 16 deals with facts connected with the facts in issue. Section 7 to 31 deal with statements about facts in issue. Section 32 and 33 deal with statement of persons who cannot be called as witnesses. Section 34 to 39, they say statements under special circumstances. 40 to 44 are judgments of courts. 45 to 51, dealing with opinions of persons. 52 to 55, character of parties in civil cases, character of the accused in criminal cases. So this is how, we have divided this entire topic into 7 broad heads.
No, not me, just generally speaking, the Evidence Act has done that. In the forthcoming lectures हमने सारा ही काम करना है, but practically speaking section 6 to 9, 11, 14, 15 and 32 are considered practically almost always by the court. तो ये these become the most important sections. इस पे मुझे command चाहिए. I need your mains के answers ready. जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ उनमें वो केस लॉज, वो सेक्शन, वो सब हम कोट करके आना, बिकॉज वी हैव टू स्कोर बेटर देन द कॉम्पिटिशन, वी हैव टू राइट अ बेटर आंसर. ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस का हमारा दोनों काम हो जाएगा. नाउ ओपन योर बैक टू सेक्शन 11. और लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार सेक्शन है. और इनफैक्ट रिपीट टू योर सेल्फ ड्यूरिंग द जुडिशरी प्रिपरेशन, रिपीट टू योर सेल्फ कि भैया मज़ा आ रहा है. वो कह रहे ना भी आ रहा हो लेकिन मज़ा आ रहा है, मंत्र रिपीट करते चले जाएगा. डोंट एवर गो इनटू दिस ये बहुत बोरिंग है, ये तो बहुत हैवी है, ये तो मुझे. जितनी बार आप जो चीज़ रिपीट करेंगे मन सुनते रहता है. तो मन बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है. इट एम्पलीफाइज वट एवर यू फीड इट. Now, since the preparation, obviously we know it is long, but it is fun. So let us try to make it as fun as possible. I'll be using examples that will make you laugh out loud, etc., etc. We'll keep it fun, but you keep repeating to yourself that this is easy, and this is easy again and again. Now, when facts not otherwise relevant become relevant, वाह, section 5 में हमने क्या करा था? Fact and issue वगैरह के बारे में बात करी थी. That we have already understood. फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट मतलब ऑर्डिनरली भाई ये क्यों हमें जानना है कोर्ट को, बट दे बिकम रेलेवेंट अंडर द टेस्ट्स लेड आउट इन सेक्शन 11. देयरफॉर दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट. इसका कोर फंडा कपल्ड आउट विद सेक्शन 6 समझ में आ गया. यू विल अंडरस्टैंड द टोन दैट सर जेम्स स्टीफन ट्राई टू टेक विद दिस एक्ट. ऑलराइट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट. फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट are relevant if they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact. If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. ये highly probable और improbable को mark कर लीजिएगा अपनी बेयर एक्ट में. नीचे पेंसिल से या तो लाइन खींच लीजिए या स्टिकी नोट लगाइए या ग्रीन कलर के हाइलाइटर मार्कर से जो आपने काम करना करिए. Illustrations. The question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. Now, full stop here. Let us go back to the section. When facts not otherwise relevant become relevant, और उसके अंदर ये कह रहा है A was at Lahore is relevant. अब भाई A committed a crime at Calcutta on a certain day. The question is that means question क्या है? Fact in issue is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. अब generally speaking, A being at Lahore is not otherwise relevant, but has become relevant because there is a fact and issue involved जिसकी ये probability और improbability बढ़ा रहा है होने की. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. Now, generally speaking, A being at Lahore, how do we care? But when we are considering the question that whether A committed a crime at Calcutta or rather in Calcutta on a certain day, then the information that A was at Lahore becomes relevant, right? Hopefully now this is pretty much clear. So this is what we call as the plea of alibi. अभी जरा इस पे वापस आते हैं ऊपर वाली illustration पे. अभी हमने काम वहाँ पे करना है. Plea of alibi. So now an alibi is not an exception envisaged under the IPC. Write this down word to word. This is the language that you have to use in the judiciary mains. अब ऐसा है जी LLB में तो आप कुछ भी अनाप शनाप लिख के सेमेस्टर पास हो गया था, यहाँ नहीं होता. So we have to be careful to write such beautiful language that makes very much huge amount of sense to the examiner. Now it is a rule of evidence. Alibi in Latin means elsewhere. आपके LLB entrance में पूछा जाता था ये सवाल. Used when accused takes the plea. When the occurrence took place, he was somewhere else. Now burden is on the prosecution to prove that he was present. But when presence is already established satisfactorily, court would be slow to accept evidence that he was elsewhere because
that has already been established. भाई इसके बारे में हम दोबारा बात क्यों करेंगे? But if he's taking a plea of alibi, so that fact which was not otherwise relevant has become relevant under section 11 prelims ka question. Where is the plea of alibi given? Section 11 of the Indian Evidence Act. Plea of alibi is based on physical impossibility of being at the scene of the crime, and so the distance between the place of occurrence and the place where the accused claimed he was at is now a material fact. क्लासिक केस लॉ जो आप अपने प्ली ऑफ एलिबाई पे अगर शॉर्ट नोट आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्ली ऑफ एलिबाई, मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मैं आपको केस लॉज मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं, मैं कोर्स में आपको इकट्ठे ही बाद में कराऊंगा पर टॉपिक, आई विल मेक यू राइट शॉर्ट नोट. सो दिस इज 2002 एसएससी 175, विल डू इट लेटर, आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द लेक्चर. नाउ फैक्ट्स शोइंग probability. Okay. If by themselves or in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. So they are basically, generally speaking logical facts but not legally relevant. So they are logically relevant but not legally relevant, but they will become legally relevant if they increase the probability of making the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact. कि ऐसा है जी, अगर वो फैक्ट अपने आप में शो कर दे जो फैक्ट एंड इशू है या कोई और रेलेवेंट फैक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे एग्जिस्टेंस या उसकी एग्जिस्टेंस होने की या ऑब्वियसली नॉन एग्जिस्टेंस होने की, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू आर ऑन, दैट फैक्ट will then come under play under section 11. So generally speaking, section 11 is basically, you can say it's an enabling section. It is enabling certain facts which were not otherwise relevant to become relevant if they are increasing the probability of existence or non-existence of any fact and issue or any other relevant fact, or if they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact. ये आप example अपनी illustration यहाँ पे आपको एक बारी यहाँ पे लेक्चर पॉज करके इस सेक्शन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िएगा, देन कम बैक एंड प्ले दिस. ऑलराइट, अब आ रहे हैं जी हम सेक्शन 9 को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करने के बाद फिर हम सेक्शन 11 पे वापस आते हैं. तो जरा बेयर एक्ट में सेक्शन 9 पे आ जाइए. फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस relevant facts. All right, facts necessary to explain or introduce a fact, an issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact, an issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time and place. तो यहाँ पे बेसिकली जो सेक्शन 9 में जो सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्रेंस, इसकी हमने यहाँ पे बेसिकली काम करा हुआ है सेक्शन 11 में. तो यहाँ पे फैक्ट्स, सॉरी आई हैड टू मेक अ small insertion because there's some ढोल playing, पता नहीं आजकल कर्फ्यू के अंदर भी लोग पता नहीं शादी वादी करें. So facts which are otherwise not logically relevant, they have become legally relevant thanks to section 11's enabling nature. All right, so this is the effect of section 11 कि they were, generally speaking, they were not logically relevant. I mean, A is at law और हमें क्या करना था, but now it has become legally relevant because when you are taking the plea of alibi, and it is crucial that we need to know whether you were present in Calcutta at that very day. Now we move to facts not otherwise relevant, though logically relevant, they may just not be legally relevant. Now why would this be? That is facts which come under exclusion of relevancy. So therefore rules क्या है, facts which would come under hearsay, hearsay हम नहीं मानते, but section 11 के तहत if that hearsay is increasing the probability of the existence of any fact and issue, शायद हम मान लें. यही इफेक्ट है सेक्शन 11 का. एंड फैक्ट्स which would come under res inter alios acta alteri nocere non debet, that is how the correct pronunciation in Latin is. तो जरा इस मैक्सिम को लिख लीजिए, प्रीलिम्स में आता है. res inter alios acta alteri nocere non debet is a transaction between strangers ought not to injure another party, which means statements made behind the back of the person against whom they are sought to be used as evidence, or opinions of third parties, or similar unconnected transactions. Basically आप कौन मैं खामा खा. So that आप कौन को, अब जैसे मान लेते हैं, let us take an example of this कि जी ऑफिसर इज करप्ट. ना वो तो भाई सब जनरल स्टेटमेंट है that every सरकारी ऑफिसर इज करप्ट. How is that relevant in a court? वो जैसे वो बस्सी जी का आता है ना, वो स्टैंड अप कॉमेडी में बोलता है कि यार कुछ बात है, मतलब कुछ सेंस है इस बात की, हमें बहुत लग रही थी उस टाइम.
कुछ सेंस ही नहीं है इस बात की। ऑफिसर जी हमने मान लेते हैं, लेट अस से दैट यू गो टू कोर्ट इन अ ट्रायल वेयर ऑफिसर इज बेसिकली आपको इस करप्शन के ट्रायल में चल रहा है, तो आप जाके हाँ मैंने सुना, बहुत सुना है, ये तो बहुत बदमाश आदमी। कहेगा एविडेंस एविडेंस लेकर आओ भाई साहब, ऐसे थोड़े ना मतलब कुछ भी सुन लोगे, राइट। लेकिन सेक्शन 11 under certain circumstances is enabling these to be included as evidence, not ये क्या बोलते हैं, not generally, but section 11 allows them, if court thinks they may help in establishing the existence of fact in issue, probable और improbability आप consider them and come to a conclusion। तो अगर probability या improbability बढ़ा रहा है, court will pay some heed and may allow these facts under section 11। Alright, now this section was deliberately left elastic to include facts which form hearsay or res inter alios acta, that is बेसिकली दो स्ट्रेंजर्स के बारे में बात हुई, किसी थर्ड पार्टी को हम क्यों परेशान करें। तो सेक्शन 11 कीप्स द डोर ओपन फॉर द जज टू यूज हिज डिस्क्रिशन एंड गिव्स देम सर्टेन टेस्ट कि प्रोबेबिलिटी इम्प्रॉबिलिटी अगर बढ़ा रहा हो या आपकी प्ली ऑफ एलिबाई अगर कोई ले रहा हो, देन दैट इंफॉर्मेशन विच वाज अदरवाइज नॉट रेलेवेंट हैज बिकम रेलेवेंट। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, A heard B commit the crime can never make the fact an issue, well B committed the crime or not highly probable। Well, it's about never, right? अब A heard B commit the crime, मतलब आप नंदिनी जी ने सुना, ये क्या बोलते हैं कि जी आदित्य जी ने कभी कोई क्राइम कमिट करा, it can never make the fact an issue that Aditya committed the crime or not highly probable। भाई सुना था बस, अब it's never, so this is naturally excluded, even section 11 won't save it। But if it makes the existence of fact an issue highly probable or improbable, then well you receive as आपका एविडेंस। तो यहाँ पे जेम्स स्टीफन ने जो इंटेंशन ऑफ जो कोर्ट कही थी बेसिकली कि जी कोर्ट हर चीज सुने, मतलब इवन रिमोटली कनेक्टेड सेक्शन 11 के द्वारा सुन सकता है, प्रोवाइडेड दैट दैट फैक्ट इज satisfying the conditions laid down in section 11। ताकि जेम्स स्टीफन जी की ये इंटेंशन रही होगी before he wrote this section is to कि भाई कोर्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम सुन ले, कोई चीज रह ना जाए एंड कोई चीज प्रोसीजरली ना रह जाए कि doesn't satisfy the evidence act, तो यहाँ पे काम हो जाए। सो यहाँ पे रेलेवेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 11 आप उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन आएगी जी फिर हमने अगर हम ये सब यहाँ पे कर रहे हैं 11 तो 7 to 9 हमने क्यों लिखा है, 32 क्यों लिखा है, तो कवर एवरीथिंग अंडर सेक्शन 11 ओनली। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफन यूज्ड सेक्शंस इवन इन ट्रायल्स कि भाई साहब ये सेक्शन 11 के अंदर दिस इज रेलेवेंट नाउ। द मेन लड़ाई सेक्शन 11 की है, तो सेक्शन 11 बिकम्स द कोर क्रक्स, वन ऑफ द मतलब core crux aspects of the Indian Evidence Act। So if the fact comes under any of those sections 7, 9, 32, it is automatically received under those sections and is considered। But for a fact to be received under section 11, all right, before it is received as a relevant fact, it must satisfy the test that of fact and issue की existence या तो highly probable बढ़ा दे या highly improbable वो भी बढ़ा दे, कुछ तो करे। That is the test of section 11। Hopefully it is clear। तो section 11 के अंदर आपकी plea of alibi दे रखी है and highly probable और improbable का काम दिया हुआ है। plea of alibi पे भी आप short note बनाना तैयार कर दीजिए और ये आपकी probability और improbability में भी काम हो जाएगा। Now we move to, कई लोग इसको कहते हैं res geste, मैं इसको res geste कहूँगा क्योंकि res geste Latin में ये ग ही होगा। So res geste is given, the doctrine of res geste is given under section 6। Now we move to section 6, but we'll keep this bifurcated, so we are going to be seeing this in the next lecture। Alright, so res geste अगले lecture में उठाते हैं ताकि course remains organized। Alright, see you in this one।